Looks like a heaven. Is it UAE? It's so green and This ocean is heaven here. called Al Marjan Island, and I feel the same things, feel the peace, same like something similar is possible. Iman, what is the project name? Right now we are in Al Marjan Island. Yes, you can see this one. On the right side, it's already is the sea. I love the sea. I love it. And we will show you the tour in Al Marjan Island. Currently, what is the construction going on? What is the actual situation? And why I have to invest? So I can make a proper broadcast, and then you can see this one. What is the Ras Al Khaimah? Why we have to invest here? What is they making? What is the current situation? Why I have to invest there? How many construction is there? Is there also, and they have the townhouse. People is living there. It's already ready. Townhouses is there. Ready to move in. Right now we are here. Is a project name is Imar Address Al Marjan. So here you see the construction is going on, and you can see the beach and the sea as well. They have already the first group already made this one, the residential place like in the hotel is apartment is there. So it's been lot of transaction. Sorry, not transaction. Ready property is there. So what you looking for? Come and buy today. Al Marjan Island. This is La Casa project by Ola developer. You can see this is next to the beach, next to the center of the island. Come and buy right now. Don't wait. So this is island. Which island is it? Al Marjan Island. No, I mean third one or fourth? Fourth one. Fourth one? And the left side is Damak. The left side is the Damak shoreline. Damak shoreline, yes. Facing the casino. Next one is Dark Global, also facing the casino. याद है तभी भाई इसका रेट 2 साल पहले के रेट ही है मेरा चमत्कार हुआ ना। जेवीसी में मेरा कंसेप्ट था कि हॉलीडे होम काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हर 2 साल 3 साल के बाद नई कोई चीज लॉन्च कर देती है। कि क्या होता है कि पहले टनल है या मेट्रो ट्रेन है या उसमें अलावा इनकी साथ में काफी सारी फैसिलिटी शुरू कर देती है, आवाम उस तरफ आ जाती है। मेन आवाम के आने का रीजन बताऊं क्या है? हाँ, कि यहाँ पे लोग अपने टैक्स बचा सकते हैं। फ्री पार्किंग है जेवीसी में। अच्छा, जेवीसी में फ्री पार्किंग थी, लोग आ गए। तो यहाँ भी सबसे मेन चीज यही है कि जहाँ कुछ ना कुछ करेंगे वो लोग, उनको भी तो कमाना है। बिल्कुल ऐसे ही है भाई, जितना हमको कमाना है उनको भी तो कमाना है भाई। अगर वो इन्वेस्टमेंट लोगों को सिक्योर करेंगे तो दूसरा बंदा आएगा ना। राइट। नहीं करेंगे तो कौन आएगा? आज हमारे साथ लीजा वीडियो I'm making, I didn't stop. ओके, सो टुडे विद मी नो इट्स उर्दू। आज हमारे साथ मिस्टर नवीन है। तो ये प्रॉपर्टी एनालिसिस भी हैं, इन्वेस्टर भी हैं और बहुत ज़्यादा मालूमात भी रखते हैं। सबसे ज़्यादा मालूमात इनकी होती है कितने टके पे कितना टका बचना है। ठीक है ना, सीधी सी बात है। इनको इस हवाले से बड़ा अच्छा एक नॉलेज है। और हमारे साथ बैठे हुए मिस्टर सलीम साहब। मिस्टर सलीम, he is the person, he is giving us the information how to secure your investment। आपकी इन्वेस्टमेंट आपने कैसे सिक्योर करनी है, किस हवाले से काम करना है, क्या क्या आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, और मेरा नाम तो आप सब जानते हैं ना, जवार हुसैन। ठीक है, तो आज हम गए थे रास अल खैमा अल मरजान विजिट करने के लिए। तो हमने सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई भी हैं और दिखा भी देंगे कि क्या है। लेकिन हम इंटरनली डिस्कशन भी कर रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाए तो इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं है।
और इन्वेस्टमेंट की जाए तो आपको क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, तो उसके बारे में बैठ के हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो लीजा, यू कैन शो अराउंड फॉर दैट, नॉट द रोड, शो देम हु इज सिटिंग, यू नो मिस्टर सलीम टेकिंग द बस बाय इन आवर हैंड एंड से बड़ा राइड कर लो। जाना है थे ये हवा ले ली ना। थोड़ा महसूस करे थे बिजनेस ही ना करे ना। कुछ हवा में कुछ है धर्म की नहीं है होता है, फर्क पड़ता है उससे, इसमें Feel बहुत आता है। फर्क पड़ता है। फील आता है। फील के अलावा पीस भी मिलता है आपको ना, सब हमारे को पीस मिलता है इन चीज़ों से। वो उधर ग्रीन साइड पे ले जाए, यहाँ पे मरजान आइलैंड का वो लगा हुआ है ना। ऐसे जाने कोई इशू नहीं। आप अच्छा वेज अच्छी है। बड़ा समंदर है ना, उसकी कोई वो नहीं है, उसको ढाल नहीं है ना किसी चीज से। This looks like a heaven. Is it UAE? It's so green and This ocean is heaven here. called Al Marjan Island, and I feel the same things, feel the peace, same like something similar is Palm Jumeirah. I worked 2 years in Palm Jumeirah, and once I came here, I believe I like it. I love this type of things. So what is your plans? They want to open office here? Definitely, inshallah, we'll open office there, and we are just bring here my investor to come and visit what it is, and we already make some podcast which people will see also soon. Amazing. But which projects do you recommend me to invest right now? Aldar, Imar, Aldar, Damak, then Dar Global, Al Marjan, Al Hamra, and then Ralph Properties. A lot of developers working there. So each and every developer working. Whatever the good price it is, whatever the price I can give it to you, I'm sure no one can give it to you. Thank you very much. सर ये बीच है, बीच में मैं आपको ये गुजारिश कर रहा है हूँ, ये सारा बीच है ना बीच में। मैं मोड़ देना गड्डी मैं से निशान पेट्रोल से पहला ਤੁਸੀਂ इससे चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं का। विच पार्ट आप कच्चे में चले जाओ, अंदर को फायदा नहीं करना। उन्हें कोटेशन बना के देनी फिर हो जाता है। और या तुम चला जाना तो चला जाएगा दफा। ये ना वो सीधा जा रही है इसके अल मरजान के ऊपर है किसी ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਘਾਲਦਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ये अपना ये लेवल अल मरजान पे भी जा रही है पता नहीं ये लेवल क्यों ऊपर है। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है आपका। किधर चलो जी ऐसा सीधे हो जाता है, लैंडमार्क हो जाता है। मैं कहाँ हूँ कि भाई बंदूक के पास में। आगे से लेफ्ट लेना है ऐसे, हाँ जी बिल्कुल। नहीं आगे सीधा ही जाए एक दफा। उसके बाद फिर लेफ्ट लेना, अगला लेफ्ट।